let's start with chapter number 7, Marginalization and Social Justice. So in this chapter, let's study about understanding marginalization. What is marginalization? They are the group or a section of society that have historically faced exclusion due to various social and economic factors. इसमें आपके scheduled caste, scheduled tribe and other backward castes and minorities होते हैं. We have scheduled caste, scheduled tribe, Adivasis, backward classes and minorities. If we talk about scheduled caste, they are the caste which is ranked lowest, right, in India. It defines those who were formerly labeled as untouchables. Then we have scheduled tribe, Adivasis, that traditionally lived in forested and hilly areas. और ये क्या face करते हैं? Social discrimination and economic disadvantage. Backward classes refers to weaker section of society जिसमें आपके scheduled caste और scheduled tribe होते हैं, right? Minority कोई particular group, मतलब कोई particular group है, उसकी स्मॉल पॉपुलेशन है तो उसमें आते हैं माइनॉरिटी, जैसे आपके मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए. सो देन वी हैव आदिवासीज, दे आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. ये जो कम्युनिटीज होती है ये फॉरेस्ट में रहती है इन द झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. और जो आदिवासीज हैं व्हाट दे प्रैक्टिस? ट्राइबल रिलीजन्स, वर्शिपिंग एंसेस्टर्स, नेचुरल स्पिरिट, माउंटेन्स, रिवर्स, your animals, and some have also been influenced by other religions. जैसे आपका बुद्धिज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया और भक्तिज्म हो गया. Adivasis and stereotyping. Adivasis communities are often stereotyped. They have their language, उनका अपना म्यूजिक है, उनका अपना folk डांस है, and they are perceived as people who maintain their culture rigorously. Right? ये जो stereotypes है किसको contribute करता है? Marginalization. Then we have Adivasis and development. Forests play a crucial role in civilization development, providing resources like iron, coal, timber and wildlife. Adivasis क्या है? ये आपके nomadic food gatherer है. If we talk about in the last century, their lives have transformed due to limited access to forest. So Adivasis group face discrimination from the government, industrialists and powerful entities. They have been cleared for timber, agriculture and mining. We are displacing Adivasis for the land. If we talk about आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, 79% ऑफ ट्राइबल्स हैज बीन डिस्प्लेस्ड. इससे क्या हुआ है? लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. नाउ इंडिया हैज 112 नेशनल पार्क्स एंड 575 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ अंडरस्टैंडिंग माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन. सो इन सोसाइटी देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन द माइनॉरिटी, मीनिंग दे आर फ्यूअर इन नंबर एज कंपेयर टू मेजॉरिटी. So this marginalization can create feeling of insecurity among the minority. इससे क्या होता है? Resentment होता है towards the majority. In India, diverse country with various religious groups, जैसे आपका हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन. What जो मुस्लिम है वो कितना constitute करता है? 13.4%. If we do comparison to other religious group, Muslims have faced disparities in socio-economic development. Many Muslims they live in substandard housing where limited access to basic amenities, जैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पाइप्ड वाटर नहीं है. नाउ लॉज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड टू एड्रेस चैलेंजेस. जो भी चैलेंजेस आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप फेस कर रहे हैं उनको आपको एड्रेस करना है. गवर्नमेंट को कुछ सोशल प्रोविजन या कुछ स्पेशल प्रोविजन एम करने पड़ेंगे जिससे हम क्या प्रमोट कर सकते हैं? सोशल जस्टिस. बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक स्कीम टू अपलिफ्ट द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड दलित्स. अगर आपको कमेंट करना है हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, देयर आर ग्रुप दैट आर प्रोवाइडेड विद प्रिजर्व सीट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग. इट्स रेफर्स टू डिग्रेडिंग प्रैक्टिस फॉर मैनुअल रिमूविंग ह्यूमन एनिमल वेस्ट फ्रॉम लैट्रिन्स ड्यूरिंग rudimentary tools such as brooms, plates, baskets and carrying on the head to dispose it anywhere. आपको करना है भाई, लोग क्या कर रहे हैं? हाथों से उठा रहे हैं, ब्रूम का यूज करें तो आपको वो हटाना, राइट? सो इन रिस्पॉन्स टू दिस ग्रेव इशू गवर्नमेंट इनेक्टेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993. इसने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करा बोथ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो मैनुअल स्कैवेंजर्स की और आप कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन. सो वी कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट में एक PI भी शाइन हुई थी 2003 जिसने क्या करा था कि इसने आइडेंटिफाई करा था और काउंट करे थे नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स और इंश्योर देयर लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशन. राइट? नेक्स्ट इज मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. सो इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 17 of the Indian Constitution,
It practice of untouchability and made as punishable offense. Supreme Court cannot be denied access to public places like temple, parks, hotels, shops and restaurants. So it provides equal opportunity. 15% of seats in education institutions and government jobs are reserved for SC. किसके लिए reserved है 15%? आपके government jobs के लिए और SCs के लिए, right? And state assemblies, seats of parliament, state assembly, पंचायत, ये किसके लिए reserved है? Supreme Court के, in proportion to the population of the state. Now measure taken. What are the measure taken for the upliftment of the Adivasi? Scheduled caste and scheduled tribe, prevention of atrocities act enacted 1989, जिससे आप क्या कर सकते हो, atrocities को against SC और ST prevent कर सकते. In 1999, Ministry of Tribal Affairs established to promote socio-economic development of Adivasi. 7.5% reservation in the government job was given and in education. Similar to SC seats in Parliament, State Assembly and Panchayat, they were reserved. जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए reserved. To uplift Adivasi socio-economically, they were provided with loan or easy interest rate. Then we have synthetic. Sometimes it's made combining various material or component to mimic the natural resource. Like synthetic diamonds, they are created in laboratories. इनको कहाँ create करा जाता था? Laboratories में. Artificial, manufactured और engineered. Artificial, human being naturally क्या करते थे? Different products का use करते. Manufacture industrial process है, right? That is not found in nature. Engineered, designed and created through scientific and technical knowledge. Other backward classes, which is socially and educationally backward classes, जो आपके आर्टिकल 340 में है और प्रेसिडेंट ने इसकी कमीशन भी अपॉइंट करी है 341 में. What are the measures taken for the upliftment of OBCs? एक तो इनको 27% का रिजर्वेशन दिया है, प्री एग्जामिनेशन कोचिंग फैसिलिटीज हैं, राइट फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो एक्टिवली इसकी तरफ काम करती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ ओबीसी. स्टेप्स टेकन फॉर सेफगार्डिंग राइट ऑफ माइनॉरिटी. फर्स्ट इज आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 30, 35A एंड 35B. 29(1) क्या गारंटी करता है? राइट्स टू माइनॉरिटी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व देयर डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, ठीक है, अपने कल्चर को. आर्टिकल 29(2) इंश्योर्स नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन को हम डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन इन एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर. आर्टिकल 30 ये आपकी जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनके राइट को एस्टैब्लिश करता है. आर्टिकल 350 इट मैंडेट्स स्टेट्स टू क्रिएट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग. इट रिक्वायर्स स्टेट टू अपॉइंट द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. Now, what steps were taken for the upliftment for the right of manual scavenger? So, if we talk about in 1993, employment of manual scavengers and the construction of dry latrine prohibition act was enacted. जिससे क्या हुआ कि इसमें क्या क्या ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट कर जाएगा अंडर दिस आर्टिकल. In 2004, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स दिया पिटिशन पे अर्ज्ड बाय द सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट issued an interim order, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. That's all for today. Thank you.